Yes, second. Yes, friends, done. Come on, Yash. Tejas, Som, Shyam, Sakshi. Ravikant Rai. Are you there, Ravikant Rai? Yes, Yash and Tejas, are you getting it? Shall I solve it for you all, students? Students, can I solve it? Sir, can I try? Bolo. Sir, both points A and B are on the top of the curves, means crest of the curves, That where means they are the on the convex. They are on the convex bridge. yes, sir. Hmm. So the weight of the car mg is perpendicular to the surface, Acting downwards. acting downwards. But Uh, due to the movement of the car on the curve, it hmm. feels reduction in the weight. It feels reduction in the weight. Why? So v is constant and the speed of car r is the radius of the curve. Okay, they've given you that So speed is constant, isn't it? yes, sir. Okay. So it is mv square by r is the amount from which it is reducting. So this reduction is inversely proportional to r as the numerator is the constant. Very good. Okay, so So the smaller the r, greater the term mv square by r. okay, very good. So the since r at point A is smaller than at the point B, so reduction in weight will be more at A than at B. It means apparent weight is less than A. Sorry, A is less than B. Very good.
क्या बात है अभी frankly sorry अभी साक्षी ना Kashish sir. oh sorry Kashish very good Kashish students she gave a very perfect reason for it she gave a very perfect reason for it students and this is how you need to work on to it students अगर तुम वैसे करोगे तो things are fine with it now see the way she has put forward things first of all you need to read the question very carefully students such kind of questions are very important उसको diametrically first of all समझो कि that point A and point B are on the same level students okay and the two objects are on the convex part of the surface students okay a convex bridge we consider A and B are the two लेकिन अगर if you carefully look into it this part is sharp curve this is a gradual curve so we can say that the radius of A is certainly less than radius of B क्योंकि ये circular path है ये भी circular path है यहाँ का radius कम है और यहाँ का radius ज्यादा है I can consider in this manner the radius is greater over here agreed now students is that clear Yes sir. now further if you see over here students if you further see over here they've given to you that a car moves at a constant speed so speed remains constant on the road as shown in the figure since it's moving a car is moving with a constant speed students the mass of the car is constant throughout so can I say weight mg is also constant and अगर किसी ने पूछा what is the weight of the car at point A it's mg what is the weight of the car at point B is also mg this is the center of A and this is the center of B agreed यहाँ पे radius कम है यहाँ पे radius ज़्यादा है RA is less than RB students the normal force by the road on the car is NA and NB okay when it is at point A and B respectively students यहाँ पे normal reaction force तो यहाँ पे normal reaction force will be in the direction opposite for A agreed and this is the normal reaction force for B equal in magnitude opposite direction we consider उन्होंने पूछा है get the relation for normal reaction force and the options are given to you students Na equal to Nb greater than less than insufficient information now how do you go about with this तो जैसे तुम देखोगे ना स्टूडेंट्स कि ये दो फोर्सेस तो एक्ट हो रहा है फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर तुम्हें पता चल गया नाउ व्हेन यू लुक इनटू दिस स्टूडेंट्स अभी देखो पहले केस में कार किस तरफ जा रही है तो बोलोगे सर कार एट पॉइंट ए है लेकिन वो नीचे की तरफ जा रही है स्टूडेंट्स इट्स गोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन यहाँ भी कार किस तरफ जा रही है सर नीचे की तरफ जा रही है अगर मैं नीचे की तरफ बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स इफ द कार इज गोइंग डाउन द स्लोप down the slope then students in both the cases can I say your mg has to be greater than the normal reaction force students आया ना दोनों केस में mg will be greater than the normal reaction force is a car bound to the surface yes the car is bound to the surface that means the force centripetal required students the force centripetal required for the car to perform circular motion is is due to the effective force due to mg and n students को समझ में आ रहा है ये कार सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ये भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है भाई तो अगर दोनों सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो मुझे फोर्स सेंट्रीपिटल चाहिए कि नहीं चाहिए चाहिए ना सेंट्रीपिटल फोर्स है क्या सर रियल फोर्स है तो यहाँ पे वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है क्या mg प्रोवाइड करेगा या n प्रोवाइड करेगा तो तुम्हें लगा सर मोशन ऑफ द कार नीचे की तरफ जा रहा है तो mg इज ग्रेटर देन n तो यहाँ पे तुम्हारा इक्वेशन क्या हो जाएगा सर यहाँ पे मेरा इक्वेशन होगा mg minus normal reaction force at point A this effective force is actually the force centripetal at A वैसे यहाँ पे भी mg minus normal reaction force at point B will be the force centripetal we consider for a car at point B. So अगर तुम देखोगे is the weight constant? हाँ सर. Is the speed constant? Yes. मुझे क्या चाहिए? Na और Nb का रिलेशन चाहिए.
तो पहले केस में Na को सब्जेक्ट बना दो. What is Na? We'll say, sir, it's mg minus mv square upon r of a. What is nb? mg minus mv square upon r of b. So इस दोनों केस में वेट है सेम. ये न्यूमरेटर सेम है जो कशिश बोल चुकी थी. तब इस सारे डिनोमिनेटर्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो. किसका रेडियस कम है सर? इसका रेडियस कम है. अगर ये वैल्यू कम है स्टूडेंट्स, ये वैल्यू कम है तो कहने से ये ओवरऑल रेशियो बढ़ जाएगा. हाँ स्टूडेंट्स, ओवरऑल रेशियो बढ़ जाएगा. ओवरऑल बढ़ जाएगा तो ये डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस कम हो जाएगा. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यहाँ पे तुम्हारा रेडियस ऑफ बी बढ़ा है तो ओवरऑल रेशियो क्या बन जाएगा? कम हो जाएगा. तो डिफरेंस यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा? तो डिफरेंस इंक्रीज हो जाएगा. अगर डिफरेंस इंक्रीज हुआ तो उसका मतलब कहने से एन बी इज ग्रेटर देन एन ए. विच ऑप्शन यू शो इट एन बी ग्रेटर देन एन ए? Friends, which option is that? Are you all there students? समझ में आ रहा है? Friends, is the Yes, audio sir. video fine? If not, then I'll close down the lectures. बंद कर देता हूँ. Unnecessarily you're forcing yourself to sit into the lectures, but there is no reply, and the person who's understanding, that person only says yes, sir. What is the fun in? Because she knows the answer. Kashi should answer. Even if she only says yes, what exactly it makes a deal? And people are coming to their comfort. People like Dishant is coming to his comfort. Kajal Singh is coming to their comfort. I don't know, Krishit also. Ravikant Rai came to his comfort. अपने अपने फुर्सत से तुम लोग अंदर आ रहे हो. Now there is some Kratu. He's trying to join in. यानी उनको कॉल किया गया by अविनाश. That's why अविनाश सर उनको कॉल किया रहेगा तभी जाके वो अंदर आ रहे हैं. स्टूडेंट्स, क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स तुम लोगों को? हाँ स्टूडेंट्स, यस सर. इसमें भी क्या था स्टूडेंट्स? यहाँ पे क्या 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 चीज है स्टूडेंट्स? ये सर्कुलर मोशन नहीं है. सर्कुलर मोशन का सिर्फ एक ही कंसेप्ट है, सेंट्रीपिटल फोर्स. बाकी स्टूडेंट्स तुम्हारा लॉस ऑफ मोशन का है. लिफ्ट का असेंड है, लिफ्ट का डिसेंड नहीं पढ़ा? हाँ स्टूडेंट्स, मोशन ऑफ लिफ्ट नहीं पढ़ा तुम लोगों ने? जो इस इतने टाइम तो देख रहे हो और कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे हो कि समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? हाँ स्टूडेंट्स, जब भी लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो द डिफरेंस ऑफ द फोर्स इज एक्चुअली द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी टू मूव द लीनियर एक्सेलरेशन है. तो नहीं करते तुम टेंशन माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, और नीचे की तरफ आता तो एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए. लॉस ऑफ मोशन में सीखा, उधर समझ में आया, वही चीज अरे अब यहाँ क्यों पे नहीं आ रहा लिखा रहा हूँ. इसका? हाँ क्या बोल रहे हो? I didn't get you. Somebody said something. Somebody said something or what? So he is talking to someone else. Who's that person? Don't know, sir. What did he say? Can I erase it now? Yes, sir. No.
Since you have done this particular question, I wanted to jump directly onto page number 94, question number 19. Then we'll go for 4, 5, 6. Students, page number 94, question number 19. Now, those who have understood will be able to answer for this. Yes, students, can you answer for this? Exactly identical questions, students. Now, those who have understood the previous one will be able to answer for this. And those who have not understood the previous one, a second time explanation for this. Exactly identical. Now, that depends on to you how do you go about with this. Students, यहाँ पे सिर्फ ये समझना है कि centripetal force is always directed from the particle along the radius towards the center of the circular path. And it's a real force, which has an origin and source. Now the question speaks about, students, a body moves along an uneven horizontal road surface. ये horizontal है लेकिन uneven surface है, students, with constant speed at all points. Now since they said it body, that means mass of the body remains constant. Mass of the body remains constant, students. Agreed? And it goes on a horizontal surface with a constant speed. Speed also remains constant, students. And students, mg remains constant. Now, if you look at the diagram very carefully, students, what do you come across? So then you'll see, sir, the radius of A is the least, radius of B is still greater, radius of C is maximum. And this is minimum. Not less, not zero, but it's less. I'll go for least. The normal reaction of the road on the body is. Now you have to find out the normal reaction of the road on the body is. Anybody?
So can I? Anybody else who wants to answer other than Ashish? Because she will be 200. The way she put forward, she will be knowing the answer. Anybody else wants to try it out? If not, then I'll tell Kashish only to speak it out. I don't want to waste much time on to the rest of y'all. It is such a simple concept and you're still thinking onto it. Since तुम लोग ने inclined plane के बारे में समझा है, तुम लोग ने motion of ये वर्टिकल लिफ्ट के बारे में लिफ्ट के बारे में तुम लोग ने पढ़ा हुआ है। इंक्लाइन प्लेन के अंदर भी अगर ऊपर धागे से कोई चीज को तुम खींच के लेके जाते हो तो ऊपर का फोर्स नीचे से ग्रेटर हो जाता है, तो डिफरेंस एक एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा। फोर्सेस के बारे में है, यहाँ पे भी फोर्सेस के बारे में है। सब कुछ समझाने के बावजूद भी व्हेन आई आस्क्ड यू हैव यू अंडरस्टूड, नो, दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम इज। साक्षी, कैन यू आंसर? साक्षी, साक्षी, कैन यू आंसर? Okay, Sham has given the answer. Sham, incorrect. Yeah, I'm explaining, Sakshi. साक्षी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यस श्याम, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। साक्षी, आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन, लिसन केयरफुली। यस, कशिश, कैन यू एक्सप्लेन? आंसर क्या होगा? Yes, सबसे sir. पहले आंसर बोलो, आंसर बोलो, क्या होगा आंसर? Sir, answer is maximum at A. ओके, एंड द रीजन बिहाइंड इट? Sir, at A, Na minus mg equals to mv square by Ra, because it is the gravitational force is opposite, so minus mg. So Na equals to mg plus mv square by Ra. Now at NB it is mg equals to mv square by Rb, and at NC it is mg plus mv r square by Rc. So radius of A is smaller than the radius of C, so normal force is greatest at A. So hence the maximum normal force is at A. एब्सोल्युटली करेक्ट। दिस इज द वे शी पुट फॉरवर्ड। अरे क्रिश, एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं अभी, एक्सप्लेन वापस काम कर रहा हूँ। मैंने कुछ लिखा क्रिश? साक्षी, कुछ नहीं लिखा, मैं वापस बता रहा हूँ मैं। And Kajal, your answer is incorrect, my dear. Now, your answer is ना students. यहाँ पे students तुम्हारा जो answer होगा ना, that is option A. A is the answer, students. That is maximum mid. And how to go about it? आंसर देखो students. अगर तुम बॉल को अगर तुम यहाँ पे देखते हो, रोलिंग डाउन था हॉरिजॉन्टल, लेकिन इरेगुलर सरफेस है, एग्रीड? तो इरेगुलर सरफेस की वजह से अगर तुम देखोगे तो तीनों का कर्वेचर देखो स्टूडेंट्स। इसका स्मॉलर रेडियस है, इसका रेडियस इंटरमीडिएट है, और इसका सबसे मैक्सिमम रेडियस है। रेडियस को देखो, वेरी वेल डिफाइंड, ये ध्यान में रखना जरूरी है स्टूडेंट्स। लुक एट द रेडियस। नाउ व्हेन यू लुक एट द रेडियस पार्ट ऑफ इट, आर इज लेस एंड आर सी इज द मैक्सिमम। लुक एट द फोर्सेस। अभी हम फोर्सेस को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो उसका वेट किस तरफ जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा, तो मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स मास सारों केस में सेम है, तो देखो ना, सब में mg क्या होगा सर? mg सेम ही रहेगा, सारों में mg सेम ही रहेगा, वेट विल बी सेम। ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स जाएगा? यहाँ पे अगर बॉडी यहाँ पे है, एच इन कॉन्टैक्ट, तो ऊपर की तरफ तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो जाएगा। ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एट पॉइंट ए है ना, यहाँ पे तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो जाएगा एट पॉइंट बी।
और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो जाएगा एट पॉइंट सी, ये सेंटर है, तीनों का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है. Now please try to judge how exactly the motion of the body is. Same formula students, exactly same way. यहाँ पे तुम देखोगे तो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है स्टूडेंट्स, यानी यहाँ पे क्या है पहले केस में Na is greater than mg, therefore यहाँ पे इक्वेशन क्या होगा Na minus mg is equal to mv square upon radius of a. ये समझ में आया स्टूडेंट्स? Since the normal reaction force of Na, ये तुम्हारा मोशन ऑफ फ्लूइड, जैसे टेंशन ऊपर ग्रेटर है, mg ग्रेटर है, लेकिन मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रहा है. So this force minus this is the effective force required for the car to perform circular motion. तो यहाँ पे Na का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Therefore Na का फॉर्मूला mg plus mv square upon radius of a. Agreed? सेकेंड केस में देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स ग्रेटर होगा? क्या एनबी ग्रेटर होगा? हाँ स्टूडेंट्स, पॉइंट बी पे तो बोलो इसे नीचे तो mg ग्रेटर होगा ना कि nb. स्टूडेंट्स यहाँ पे ग्रेटर होगा, mg इज ग्रेटर देन nb. Are you greater? Is that clear? Yes, sir. Now see, na is greater than mg. Na is greater than mg and mg is greater than nb. So na is greater than nb. आया ना? If 3 Yes, is sir. greater than 2, if 3 is greater than 2 and 2 is greater than 1 and 2 is greater than 1, then 3 is greater than 1. आया ना? Yes, sir. तो मुझे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, इन दोनों को मैं कंपेयर करूं तो ऑफ कोर्स मेरा Na ग्रेटर आ जाएगा. अगर तुम चाहो तो इक्वेशन भी बना सकते हो. व्हाट इज द इक्वेशन? सर यहाँ पे इक्वेशन आएगा mg minus nb is equal to mv square upon radius of b. So what is nb? mg minus mv square by radius of b. ये सेकंड पोजीशन के लिए. थर्ड पोजीशन में क्या हो रहा है? सर थर्ड पोजीशन में वापस बॉडी ऊपर जा रहा है, तो nc इज ग्रेटर, तो यहाँ पे nc इज ग्रेटर देन mg. एग्रीड? लेकिन अभी इसको तुम कंपेयर नहीं कर सकते हो इसके साथ में, यानी अभी तुम्हारा कंपैरिजन किस में होगा? na इज ग्रेटर देन nb तो है ना? na इज ग्रेटर देन mg, nc इज आल्सो ग्रेटर देन mg, और ये nc विल बी आल्सो, यानी तुम्हारा कंपैरिजन, अभी तुम्हारा आंसर इन दोनों में ही जाएगा ना. लेट्स गो फॉर दिस. इसके अंदर मैं कंपेयर करूंगा तो ये इससे ग्रेटर है, तो कहना से nc minus mg is equal to mv square upon radius of c. So what is nc? mg plus mv square upon rc. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? आर द इक्वेशंस क्लियर नाउ? Yes, sir. अभी हम ध्यान से सुना प्लीज, अभी ध्यान से सुनना. अभी हमारा कंपैरिजन होगा इन दोनों के बीच में, यानी दो इक्वेशंस. अब मुझे बताओ स्टूडेंट्स, पहले केस में और थर्ड केस में किसका रेडियस कम है? तो बोले सर आर ए का रेडियस कम है. प्लीज एवरीबॉडी हैव अ लुक इनटू दिस. अगर ये आर ए का रेडियस कम हुआ तो स्टूडेंट्स ये पूरा रेशियो क्या हो जाएगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ स्टूडेंट्स, मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, 1/2 ग्रेटर है या 1/4 ग्रेटर है? हाँ स्टूडेंट्स, है ना? ये 0.5 और ये 0.025. स्टूडेंट्स ये मैथ्स है, ये फिजिक्स नहीं है. मैं मैथ्स बता रहा हूँ, फिजिक्स हो चुका स्टूडेंट्स तुम्हारा. फिजिक्स ये पता चल गया, फिजिक्स हो गया. अभी आंसर को ढूंढने के लिए तुम्हें मैथ्स का यूज कर रहे हैं हम लोग हेल्प. हाँ, अगर वो अगर क्लियर नहीं हो रहा है, प्लीज ब्लेम योर मैथ्स, डोंट ब्लेम माय फिजिक्स फॉर दैट. अगेन आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली स्टूडेंट्स, लुक एट इट. ये तो तुम्हारा mv स्क्वायर तो सेम ही रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, तो तुम्हारा mv स्क्वायर तो कांस्टेंट होगा. अगर तुम्हारा डिनोमिनेटर कम है तो तुम्हारा फ्रैक्शन बढ़ जाएगा. एग्रीड? mg भी कांस्टेंट है. अब इसको कंपेयर करो आरसी से. आरसी में क्या है सर? मेरा डिनोमिनेटर बढ़ा है, तो मेरा पूरा फ्रैक्शन कम हो जाएगा ना. mg तो कांस्टेंट है. अभी दोनों की वैल्यू, सपोज अगर मैंने mg को 10 ले लिया स्टूडेंट्स,
इसको भी मैं 10 लेता हूँ mg को, दोनों में प्लस साइन। लेकिन देखो ये रेशियो बढ़ा हुआ है, ये रेशियो बढ़ा हुआ है, ये रेशियो क्या हो रहा है, कम। तो कहने से एडिशन ऑफ दिस विल फर्दर इंक्रीज, एडिशन ऑफ दिस इज स्टिल लेस। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यानी which is maximum, which is maximum, normal reaction force is maximum at point A. अभी मैं अगर मिनिमम पूछा तो कौन सा होगा, मिनिमम पूछूंगा तो कौन सा होगा, look at RB. Students, ये mg mv square by r, whatever the value of RB I'll consider will be. Students, RB is greater than this but less than this, but still ये नेगेटिव साइन बताता है कि ये तो डिफरेंस आ रहा है, तो सबसे मिनिमम ये होगा, सबसे मैक्सिमम ये होगा। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. All of y'all, all Yes, of sir. y'all, not 2 or 3. The students, your option is A. The normal reaction force at A is maximum. स्टूडेंट्स अगर ये चाहता तो मैं सिर्फ रेडियस के हिसाब से बोल के इसको थियोरेटिकली लेके कंप्लीट कर जाता, लेकिन स्टूडेंट्स देखो वहां पे हम लोग कंपेयर कर रहे थे किसके लिए, सेम ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट पाथ था, दोनों कॉन्वेक्स थे, स्टूडेंट्स दोनों कॉन्वेक्स थे। तो वहां पे अगर कोई कोई स्टूडेंट मेमोराइज करना चाहे भी तो कर सकता है कि एक छोटा रेडियस एक बड़ा रेडियस, दोनों कॉन्वेक्स, दोनों का हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज सेम, तो एक एक रिमेम्बरेंस हो जाता है। लेकिन अभी यहाँ पे देखो दो कॉन्केव है और एक कॉन्वेक्स है, यानी जब तक स्टूडेंट्स तुम ऐसे इक्वेशंस बना के नहीं समझोगे यू विल नॉट बी एबल टू ट्रेस इट। Is this clear to all of you? Can I erase it students? इसको erase कर दो अभी मैं। Yes. Okay, now please let us go with the fourth, fifth, and sixth. Can you answer the fourth one, students? Yes, anyone, students? Fourth one. I do feel so Kashish had done the fourth one in the last lecture. Particle of mass m is moving in a circular path of a constant radius, such that its centripetal acceleration is varying with time. Since fourth वाले में ये बताया गया है कि centripetal acceleration is given by the formula, students, k square rt square, where k is a constant. Students, k constant है। यहाँ पे acceleration centripetal can be considered in terms of m r omega square, क्योंकि तुम्हारा r एक आ रहा है, तुम्हारा acceleration centripetal is equal to m omega square into r. So you can consider your k to be somewhere in terms of this. A hint I'm giving it to you. Students, वापस a particle m is moving in a circular path of constant radius. Particle is m moving in a circular path of constant radius. Agreed? R such that its centripetal acceleration का formula, oh sorry, ये तो force हो जाएगा, very sorry students. Omega square into r, students. Centripetal acceleration is r omega square, students. So तुम्हारा omega square can be considered as k. So centripetal acceleration, students, with depends with respect to time we consider in this case. Okay. So your centripetal acceleration is r omega square, students. So omega square can be written in terms of k is a constant and time is given to you, students. Okay. So omega square can be equal to k square, r square, and t square, or we can root it like omega equals to krt.
कैन बी कंसिडर्ड, लेकिन यहाँ पे अभी तुम्हारा एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल k स्क्वायर r t स्क्वायर दिया है एंड k इज ओनली अ कांस्टेंट गिवन टू यू एंड तुम्हारा एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल यू हैव टू गो विद रिस्पेक्ट टू टाइम. क्या पूछा उन्होंने? पावर डिलीवर्ड बाय द पार्टिकल बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, बाय पावर g. देखो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल का एक ही फॉर्मूला नहीं है. फिर अगर मैं एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल के तुम्हें फॉर्मूलाज दूं तो देयर आर 3 फॉर्मूलाज. अभी तुम कौन सा यहाँ पे तुम और प्रिसाइजली तुम ले सकते हो, वो तुम्हारे पे डिपेंड है. Sir, V square by R. यस. फिर एक्सेलरेशन, चलो मैं एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल के 3 फॉर्मूला मैं तुम्हें दे देता हूँ. इट्स v into omega is r omega square and it is v square by r. Now you have to think क्या करने वाले हो तुम. चलो पावर चाहिए तुम्हें और हिंट मैं देता हूँ स्टूडेंट्स. चलो हिंट इवन ऑलरेडी Kashid also told you, use this. Anybody has got the answer for it? Kashish, have you got it? Yes, sir. Anybody else who wants to answer or shall I ask Kashish? श्याम, ये तूने क्या लिखा है? ऑप्शन सी इज आल्सो करेक्ट. किसके लिए लिखा है तूने श्याम? हाँ सर श्याम, वो ऑप्शन ऑप्शन वो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए लिखा है कैसे? ऑप्शन सी कैसे होगा? सर, क्योंकि ऑप्शन सी में दिया है नॉर्मल इज मिनिमम एट सी, और आपने सॉल्व किया था ये मिनिमम ही आ रहा था, तो वो भी आंसर है क्या इसके, वो मैं अच्छा पूछ रहा. हाँ, वो भी दिया है क्या? मैंने देखा ही No, नहीं. sir, आपने बोला minimum at B ना. हाँ, मिनिमम विल बी एट बी. सी नहीं आएगा, बी आएगा क्योंकि सप्रास नहीं चांद है ना वहाँ पे. बी मिनिमम होगा. ओके सप्रास सर. नहीं आया था ना बी के लिए, तो वो मिनिमम होगा सबसे. Okay, Kashish, chalo carry on. You only answer. Sir, so first I have said the centripetal acceleration is given k square RT square, where centripetal acceleration formula can be also taken as V square by R, which is V square by R equals to k square RT square. We can take R at that side, so V square becomes k square R square and T square. We can root it and it will become V equals to KRT. Tangential acceleration is AT equals to dV by dt, which is equals to KR. So tangential force acting on the particle is F equals to MA M acceleration tangential, which is equals to MKR. So power delivered will be P equals to F into V, which is FV cos theta. Therefore, P equals to FV equals to MKR into KRT, where theta is 0 degree. So P equals to MK square R square T. Students, what she said it को समझ में आया? Okay, students, she actually went very correctly, students. लेकिन अभी हम देखो, तुम्हें ये पता है ना? ये दिया गया हाउ टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. तुम्हें ये मालूम है मास इज m, रेडियस इज r, एक्सेलरेशन के 3 फॉर्मूलास तुम्हें पता है, k कांस्टेंट है, तुम्हें पावर पूछा है. गो ऑन टू योर इंस्टिंक्ट्स. चलो तुम शुरू कर रहे हो लेकिन तुम्हें प्रॉब्लम क्रैक ही नहीं हो रहा है ना?
तुम गिवन इंफॉर्मेशन से पी की तरफ जाओगे या पी से गिवन इंफॉर्मेशन की, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। तो अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम्हारे पास में तीन चीजें हैं, तो तुम कहाँ से जाओगे? तीन रास्ते हैं, तो ये कंफ्यूजन होगा। यहाँ पे तुम्हारा रास्ता है जहाँ पे तुम बोल सकते हो सर पावर अगर मुझे चाहिए तो मैं वर्क अपॉन टाइम ले लूंगा, पावर को मैं लिखूंगा फोर्स इंटू वेलोसिटी डॉट प्रोडक्ट। देखो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है स्टूडेंट्स। फोर्स यानी कौन सा फोर्स? सर मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी आई कंसिडर। Agreed? So is it clear? What is acceleration? Rate of change of velocity. क्या इतना क्लियर हो गया स्टूडेंट्स तुम्हें? Is it clear? यस सर क्लियर। तो अभी तुम्हें वेलोसिटी कहाँ पे लेना चाहिए? कौन सा इक्वेशन लेने की जरूरत है? v और ओमेगा तो नहीं लोगे वेलोसिटी में, तो ये यहाँ पे v नहीं आ रहा है तुम्हारा, यहाँ पे आ रहा है ना v। एग्रीड? तो आई गो फॉर एक्सेलरेशन। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन सेंट्रिपिटल को मैं लिखूंगा v स्क्वायर बाय r और उसको मैं लिखूंगा k square r t square। Therefore can I say what is v square? K square r square t square. So what is v? K r t। क्या ये क्लियर हुआ? हाँ स्टूडेंट्स, क्या ये क्लियर हुआ? ये v बना सब्स्टिट्यूट करोगे, ये आ गया यहाँ पे। यानी इसके जगह पे तुम क्या लिखोगे? इसके जगह पे तुम लिखोगे k r t। एक्सेलरेशन क्या है? ये देखो एक्सेलरेशन क्या है? dv by dt है ना। तो डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो स्टूडेंट्स। आता है डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट? के आर टी बाय डी टी। तो ये के आर हो जाएगा स्टूडेंट्स, डी टी विल गेट कैंसिल। तो देखो एक्सेलरेशन की जगह पे क्या लिखोगे? हाँ स्टूडेंट्स, के आर मास तो एम ही रहेगा। व्हाट इज द आंसर फॉर पावर? एम के स्क्वायर आर स्क्वायर टी। विच ऑप्शन चूज विद दैट? बी। एग्री स्टूडेंट्स? Yes, sir. Students, this is the velocity which is differentiated with respect to time, and that is what is going to give me which acceleration? ये centripetal नहीं है तुम्हारा, ये tangential acceleration है। Students, power due to centripetal force is 0. हेलो स्टूडेंट्स, अगर मैंने यही हम लोग ने मैथ्स कॉलम में किया है, पावर दो टाइप के यहाँ पे है स्टूडेंट्स, एक सेंट्रिपेटल फोर्स के हिसाब से है और एक टेंजेंशियल फोर्स के हिसाब से। टेंजेंशियल फोर्स के हिसाब से पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, टेंजेंशियल। लेकिन सेंट्रिपिटल के हिसाब से देखोगे ना, तो ये डॉट प्रोडक्ट तो 90 आ जाएगा, कॉस ऑफ 90, क्योंकि वेलोसिटी इस तरफ जा रहा है। सेंट्रिपिटल तो ये तो पावर ड्यू टू सेंट्रिपिटल फोर्स इज ऑलवेज 0। समझ में आ रहा है? ये कौन सा पावर पूछा तुम्हें? टेंजेंशियल के हिसाब से पूछा। क्या ये क्लियर हुआ? तभी जाके कशिश कब से टेंजेंशियल 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 बोल रही थी। एंड देखो स्टूडेंट्स, ये अप्रोच कैसा है? तुम जब यहाँ पे आओगे तो तीन फॉर्मूलाज है, तो तुम्हारे तीन डिफरेंट वेज ऑफ गोइंग इट। पावर के अंदर तुम्हें पता है पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, वो तो तुम लोगों ने की, यहाँ पे भी वर्क के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। फोर्स इंटू वेलोसिटी, बहुत 10 में से 5 स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला तुरंत याद आ जाएगा, क्योंकि सबके दिमाग में वर्क अपॉन टाइम वर्क अपॉन टाइम वर्क अपॉन टाइम ही दिमाग में ठुसा हुआ। जैसे फोर्स इंटू वी आ गया तो तुम्हें पता चलेगा फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन वी है। तो अगर मुझे वी चाहिए तो इसमें से कौन सा? मैं वी ओमेगा तो नहीं लूंगा, वी स्क्वायर बाहर ही ले सकता हूं मैं। और उसको मैंने इक्वेट कर दिया विद एक्सेलरेशन। क्या मैं इसको इरेज कर दूं स्टूडेंट्स? अभी स्टूडेंट्स कैन आई इरेज? Yes, sir. तुम्हारा अभी तुम्हारा सोल्यूशन ऐसे भी जा सकता है या तुम ऐसे भी जा सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कैसे तुम्हें कॉपी करना। ओके, you said it, yes, I'm erasing it. First one, next one.
Is anybody for the fifth one? अच्छा सिंपल वन स्टूडेंट्स, अभी ये आना चाहिए. A small block is shot into each of the four tracks as shown below, students. Okay. Small block is shot into each of the four tracks as shown below. Yani students, mass of the block is same, uska horizontal speed सब में same ही है students. ये ध्यान में रखना. सिर्फ track का curvature अलग है. Curvature के ऊपर ध्यान देना students. Each of the track rises to the same height. सबका height same है, यानी gravitational potential energy सब में same है. The speed with which the block enters the track is the same in all cases. At the highest point of the track, the normal reaction is maximum. देखो normal reaction कुछ तो तुरंत तुम स्टूडेंट्स अगर तुम देखोगे तो देखो यहाँ पे तुम्हें अगर क्या चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन हाईएस्ट. स्टूडेंट्स हाईएस्ट अगर तुम्हें ढूंढना है तो तुम दो रेडियस को सिलेक्ट करो ना. डायग्राम में तुम दो रेडियस को सिलेक्ट करो, सबसे छोटा और सबसे मैक्सिमम. क्योंकि स्टूडेंट्स जब भी तुम कभी भी तुम हाईएस्ट पे जाते हो स्टूडेंट्स, अभी ये अंदर की तरफ है बॉडी स्टूडेंट्स. अभी यहाँ पे बॉडी अंदर की तरफ है. हमने जो क्वेश्चंस किए थे वो बाहर की तरफ थे, लेकिन एक कॉन्केव की तरफ अंदर की तरफ था, है ना. अब ये सारों में टॉप मोस्ट पोजीशन में अंदर की तरफ आएगा. अंदर की तरफ आएगा यानी mg नीचे की तरफ हो जाएगा. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी ये होगा, ये फोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल उसको होल्ड करके रखेगा. हाँ स्टूडेंट्स, ये बताओ अभी क्या करोगे तुम. फोर्सेस समझ में आया स्टूडेंट्स. सारे डायग्राम में यही आएगा ना. सारे डायग्राम में जब ब्लॉक ऊपर की तरफ आएगा, कर्वेचर छोड़ दो ना फॉर द टाइम बेइंग. टॉप मोस्ट पोजीशन के कर्वेचर पे आएगा तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नीचे जाएगा, mg नीचे जाएगा, लेकिन फिर भी बॉडी वहां पे होल्ड है ना भाई. ये दो फोर्सेस की वजह से तो बॉडी नीचे गिरना चाहिए, लेकिन गिर नहीं रहा है. वो टैंजेंशियली चला जाएगा. यानी बाहर की तरफ कोई फोर्स है विच इज इक्वल इन मैग्नेट ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू विच फोर्स, सेंट्रीपिटल, एंड दैट इज फोर्स सेंट्रीफ्यूगल. अभी ये फोर्स सेंट्रीफ्यूगल किसकी वजह से, तो which force has to be greater. Yes, anyone? कशिश अभी आंसर दे सकते हो. हाँ कशिश. No, sir. क्यों क्यों, उसके लिए आंसर आ गया, इसके लिए आंसर नहीं आ रहा है. अगर टॉप मोस्ट पोजीशन पे अगर मैंने इक्विलिब्रियम बोल दिया तो क्या है सर, n प्लस mg mv स्क्वायर बाय r. So n is equal to mv square by r minus mg. हाँ या ना स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन होगा कि नहीं होगा. Yes, sir. अब ये सिंपल सारे प्रॉब्लम सारे डायग्राम्स में यही इक्वेशन आएगा कि सारे में ब्लॉक ऊपर की तरफ है. अभी कर्वेचर को बाद में हम देखते हैं, पहले ये इक्वेशन क्लियर हुआ. अभी ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, सारे इक्वेशन में माइनस mg आ रहा है. इज द वेट सेम सारे केस में. हाँ Yes, sir. check कर दो. यानी तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसके ऊपर डिपेंड होता है, Sir, inversely proportional. to radius. Is the mass same in all the cases? Was it going with same velocity? Students? So now if I happen to go forward exactly, पूछा तुम्हें at the highest point of the track the normal reaction is maximum. किसका radius सबसे minimum दिखाई देता है students? Which option? Sir, 2. B. A. Radius minimum B में दिखाई देता है. नहीं sir, A. Sorry, A. Students देखो ना, radius सबसे minimum किसमें है? A Look at the में. curvature. इसका radius फिर भी बड़ा है, इसका radius फिर भी बड़ा है, इसका radius और भी बड़ा है स्टूडेंट्स. सबसे minimum radius कौन से ऑप्शन में है? A. So the answer for this would be what? A.
क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. The rest of them, all the students who are in the group, hope you are able to get this thing very clearly. And students, I made it very clear at the topmost position. At the topmost position, students, we simply consider the normal reaction force at the topmost position for the body to be zero, for the body to be in contact. Your force of centrifugal should be very large. And the velocity with it moves should be 100 rg, students. V is equal to 100 rg. So the answer for this will be option A. Can I erase the students? Students? No reply. Good. Yes. The sixth one, students. You must be thinking that these are all JEE questions. That's why should we try it out? Students who are for NEET and all. Students, but even these type of questions can be asked for NEET also. Don't be in that impression that we are doing JEE and IIT questions. We're not doing NEET questions. Yes, sixth one, anybody? Sir, in the question it is written see the figure, but the figure is not given anywhere. You can draw even for me, there is no figure over here. The figure, you can draw it now. An insect crawls up a hemispherical surface very slowly, crawls up. तो तुम्हें एक हेमिस्फीयर बनाना है. जरूरी नहीं कि फिगर देते भी है, फिगर नहीं दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना. ये हेमिस्फीयर है ना, क्रॉल्स आप यार, ये कॉन्केव सरफेस हो जाएगा, ये सेंटर है और ये तुम्हारा इंसेक्ट है, ऊपर की तरफ क्रॉल हो रहा है, इट्स क्रॉलिंग अप. Since an insect crawls up a hemispherical surface very slowly, the coefficient of friction between the surface and the insect is, यानी तुम्हें ये मालूम है, mu coefficient of static friction is 1/3 is given to you. यानी ये ऊपर जा रहा है, स्टूडेंट्स, ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जाने के बाद में इसको होल्ड कौन करके रख रहा है? फ्रिक्शन. अगर सपोज ये ऊपर जा रहा है, सरफेस स्मूथ है, तो शायद वो स्लाइड होके नीचे भी आएगा. रिस्टोरिंग फोर्स बता चुका हूं मैं. स्टूडेंट्स, ये सब कुछ बताता हूँ. ये कौन सा मोशन हो जाएगा? वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो जाएगा, हेमिस्फेरिकल बाउल. Agreed. So the coefficient of friction between the surface and the insect is 1/3. If the line joining the center of the hemisphere surface to the insect makes an angle alpha, ये सब कुछ दिया हुआ है स्टूडेंट्स. डायग्राम की जरूरत ही नहीं है, सब इंग्लिश में दिया हुआ है. अल्फा, अगर मैं चाहता तो मैं बोलूँ कि डायग्राम नहीं दिया है, प्रॉब्लम नहीं करते है ना. मैं ये भी कर सकता था स्टूडेंट्स. कशिश ने बोला इसका डायग्राम नहीं है. अगर कशिश ने बोला डायग्राम नहीं है एंड कशिश इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु इज आंसरिंग, तो मुझे तो उसको ही पैम्पर करना है ना. मैं तो कशिश को पैम्पर कर दूंगा, कशिश अच्छा डायग्राम नहीं है, सो मे बी ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है. चलो हम लोग जाते हैं नेक्स्ट वाला, 8th वाले पे चले जाते हैं. कशिश हाँ बोल देती. नहीं सर, मैं हाँ नहीं बोल. जो हिसाब से तुमने बोला डायग्राम नहीं फाइन, लेकिन तुमने अगर हाँ बोल दिया तो सारे ने वही सोचा होगा कि नहीं चलो आगे बढ़ते हैं. दिस इज व्हाट इज द अप्रोच ऑफ योर्स टुवर्ड्स स्टडीज, इज यू नो दैट. तुम्हारा अप्रोच ये है. अब मैं चाहता हूँ ये सारे पेरेंट्स सुने, आओ तुम मीटिंग में, बोलता हूँ तुम्हारे पेरेंट्स को क्या क्या है तुम्हारे बारे में. ईच एंड एवरी पर्सन, ईच एंड एवरी पर्सन. आज पूरा फैक्ट सामने आएगा. I'll tell everything. Okay. And please, I want your books to be completed. Huh? Complete books leke aana. I'll show it to your parents how much have you written it and how much. And don't give the reasons कि there are no video lectures. ये reason देना ही नहीं. ये reason देना ही नहीं है, please. अपने आप को बचाने की पूरी try करना. Okay? जितने reasons find out कर सकते हो, find out करके रखना. Mentally parents को prepare करना, students.
But this is, I want to tell them very clearly what is happening with your. Okay, students, the coefficient of friction is 1/3. If the line joining the center and the hemisphere surface of the insect is alpha, students, alpha दिया हुआ है, students, ये, with a vertical. The maximum possible value of alpha. Students, ये maximum possible value of alpha क्या होगा? बस तुम्हें ये alpha निकालना है. क्या एंगल तुम मैक्सिमम तक लेके जाओगे? Kashish, I'm least bothered with all of your statements. I'll keep all these statements to yourself. If you're not free, then we are IITians are not at all free for you. Okay, that is your approach. If your parents are happy with it, it's fine. I have no problems in that. Give me the answer for this, students. Alpha, maximum value of alpha. उसका मतलब क्या students मालूम है? Maximum value of alpha का मतलब क्या हुआ? Insect ऊपर की तरफ जा रहा है. कहाँ तक insect ऊपर की तरफ जा सकेगा? उसके बाद में शायद वो नीचे गिर सकता है. To what angle it can hold? That's a question asked. If the line joining the center of the hemisphere surface to the insect makes an angle of alpha with the vertical, the maximum possible value of alpha is given. Is anybody? mg sin alpha. mg sin alpha, लेकिन ऑप्शंस में तो cosec, sec a, tan a, cot a दिया है. So जब भी तुम ऑप्शंस देखते हो तो डोंट यू थिंक सो कि एक तो cosec दिया है यानी 1/sin आएगा, sec यानी cos भी आएगा, tan भी आएगा, cot भी है. अल्फा मैक्सिमम पूछा था, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा. उसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? देखो ना, अगर ये इंसेक्ट ऊपर जा रहा है तो उसका एंगल विद द वर्टिकल बढ़ते जा रहा है. यानी जैसे जैसे वो चढ़ान पे जा रहा है स्टूडेंट्स, भले वो फ्रिक्शन होल्ड कर रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर इंक्लिनेशन पे आएगा तो उस टाइम पे शायद फ्रिक्शन भी उसको सपोर्ट नहीं करेगा मोशन के लिए, वो स्लाइडो के नीचे आ जाएगा. तो हम लोग वो पोजीशन पकड़ते हैं ना, वो एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा का पोजीशन हम लोग पकड़ते हैं जहां पे इंसेक्ट अभी भी होल्ड करके रख रहा है, यानी वो अभी इक्विलिब्रियम में है. तो तुरंत तुम बोलेगा अरे सर इक्विलिब्रियम में, यानी आप उसको एक पार्टिकल समझ लो. सर तो करते हैं ना फोर्सेस को रिजॉल्व, ये mg हो जाएगा. सर इंसेक्ट का ये फोर्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो जाएगा. सर अगर 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 उस टाइम पे अल्फा इससे और थोड़ा सा बढ़ा दिया तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, टेंजेंशियल फोर्स लगेगा. सर ऐसा करते हैं यानी mg को रिजॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, n को तो रिजॉल्व नहीं कर सकते. तो मैंने mg को रिजॉल्व किया तो ये एक आ गया, ये एक फोर्स आ गया, ये अल्फा हुआ तो ये मेरा अल्फा हो गया. तो स्टूडेंट्स देखो, ये तुम्हारा सर्कुलर पाथ है स्टूडेंट्स. अभी इंसेक्ट यहाँ पे है, ये तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये तुम्हारा mg, दिस इज वन फोर्स कॉल्ड एज रिस्टोरिंग. ये तुम्हारा अल्फा था तो ये तुम्हारा अल्फा हो गया, ये होगा mg sin अल्फा, ये हो जाएगा तुम्हारा mg cos अल्फा. फ्रेंड्स वर्टिकल सर्कुलर मोशन का ही तो कंसेप्ट आ गया मेरा. नाउ ट्राई टू रिजॉल्व देम. तो कैन आई से माय mg cos alpha is equal to normal reaction force. My mg sin alpha balances which force? Balances, अगर ये इंसेक्ट इस तरफ आता है तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन ऑपोजिट जाएगा. तो कौन सा होगा? फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. Take the ratio of the two, mg will get cancelled. Cos alpha upon sin alpha is equal to n. What is force of static friction, students? Mu s into n, है ना? n will get cancelled. ये क्या हो जाएगा? Cot alpha is equal to 1 by mu s. How much is mu s? 1/3. So what is cot alpha? 3. Which option shows me that? Which option shows me that, A. students? A.
तो मुझे बताओ अभी ये क्वेश्चन में और वर्टिकल सर्कुलर मोशन में फर्क क्या था? चलो, क्या मैंने नहीं बताया था तुम लोग को स्टूडेंट्स? जब भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है, अगर तुमने बॉडी को नीचे मैक्सिमम स्पीड √5g नहीं दी तो बॉडी सर्कल कंप्लीट ही नहीं करेगा. If it doesn't get that sufficient speed of √5g, it will not complete the circle. दूसरी बात, लोवेस्ट पॉइंट पे √5g है, डायमेट्रिकली के अंदर √3g है. अगर सपोज मैंने लोवेस्ट पॉइंट पे √2g दिया होता, √2g, तो क्या वो डायमीटर की तरफ पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा, क्योंकि डायमीटर तक पहुंचने के लिए उसको √3g आपने दिया ही √2g स्टूडेंट्स. तो क्या होगा? सब बॉडी जाएगा ऊपर, लेकिन उसको वापस नीचे आएगा. नीचे कौन सा फोर्स लेके आएगा वो भी मैंने बता दिया था, mg sin थीटा. इसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स. अगर बॉडी नीचे की तरफ आएगा तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन ऑपोजिट जाएगा. ये यहाँ पे हमने मैक्सिमम ले लिया है, मैक्सिमम ले लिया है. अगर बाय चांस इंसेक्ट इसके बियॉन्ड जाएगा तो ये फोर्स इसको खींचते हुए नीचे ले जाएगा, फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा. फिर क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? And since it's vertical circular motion, we have to resolve 10. तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हुआ, ये mg हुआ. mg को हम रिजॉल्व करेंगे, ये अल्फा करस्पॉन्डिंग एंगल. तो mg cos alpha, mg sin alpha. mg cos alpha balances the normal reaction force. mg sin alpha is a force of static friction. और ये तुम लोग ने फ्रिक्शन में पढ़ा हुआ है, μs into n. Can I erase this? Erase करो. Yes, sir. Okay. Now students try to work out with 8, 9th and 10th. Question number 8, 9, 10, 10. Give me the answer, students, as fast as possible. We did the 7th one. Yash and Tejas, you are not answering at all. Achha, you are just replying yes. Labdi has stopped. She's not there at all now. No, she's there, but she's not responding at all. Sir, I need to see the video lectures first. My dear, इसके लिए वीडियो लेक्चर्स की जरूरत नहीं है. Sir, at least to understand the concept लवली properly. मुझे ये बताओ, लवली मुझे ये बताओ, लवली मुझे बताओ, तुम तुम्हारे फ्रेंड्स के अंदर थिएटर में गए और तुमने आधे घंटे का मूवी मिस कर दिया, हाँ? तो तुम क्या करोगे? थिएटर में जाओगे नहीं, बैठोगे नहीं अपने फ्रेंड्स के साथ में, बाकी के 1.5 घंटे का या 140 मिनट्स का मूवी नहीं देखोगे? हाँ, और मूवी देखने के टाइम पे क्या तुम बातचीत करोगे आजू बाजू में, दूसरों को भी बोलोगे कि भाई तू भी मत देख, मैं तो नहीं देख रही हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा तो मैं आगे नहीं देख रही हूँ. तुम जबरदस्ती बैठोगे थिएटर में, या तो तुम थिएटर से बाहर निकल जाओगे, या बैठोगे तो कॉन्सेंट्रेट करोगे. तो ये भी थिएटर हुआ, ये स्क्रीन हुआ. सिर्फ वो बात है कि मेरा कैरेक्टर में सिर्फ मेरा हाथ ही दिखाई दे रहा है, शक्ल नहीं दिखाई दे रही है. शक्ल दिखा दूं? ओके, इट्स लाइक दैट. But वहां पे तुम तुम्हारा दिमाग यूज करोगे टू अंडरस्टैंड द मूवी फर्दर, टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर्स ओवर देयर, whether you are in a theater or whether in a home. Over here, और इसमें क्या था मुझे बताओ, क्या था? सारों में फोर्सेस का ही कंसेप्ट हम लोग ले रहे हैं. लॉज ऑफ मोशन तो तुमने अटेंड किया था ना? लॉज ऑफ मोशन अटेंड किया ना? सारे जितने भी क्वेश्चंस किए वही कर रहे हैं हम लोग, फोर्सेस के बारे में जा रहे हैं. सिर्फ एक सेंट्रिपिटल आ रहा है, उसको मैंने बता दें कि कौन सा फोर्स ग्रेटर की वजह से सेंट्रिपिटल आ रहा है. तो हाँ या ना तो बोल सकते हो ना कि नहीं क्लियर है, नहीं क्लियर क्या है. No, I'm not saying it ki there are issues with you. I'm not saying it कि no, you're not. Health is very one cause is there. Health की वजह से तुमने मिस किया है, मैंने कहा मना किया है. उसको जरा भी नहीं कर रहा हूँ कि नहीं, it is something wrong which you have done it. No, किसी का कंट्रोल नहीं होता हेल्थ के ऊपर स्टूडेंट्स, किसी का कंट्रोल नहीं होता.
लेकिन जब भी तुम बैठो किसी चीज ये लाइफ में ध्यान रखना, कोई भी चीज तुम जिंदगी में करो स्टूडेंट्स, कोई भी तुम कहाँ पे भी जाओ, कहाँ पे बैठो, तुम गए हो भले अपने विल के अगेंस्ट में बैठे हो, लेकिन उस टाइम पे गिव योर 200% श्योर वेर एवर यू आर, वॉट एवर यू आर डूइंग। अगर तुम्हें कहीं नहीं जाना और पेरेंट्स तुम्हें जबरदस्ती लेके गए हैं, वहां पे भी तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ में जाना था लेकिन तुम्हें वहां पे लेके, फिर भी पुट 100% एंड 200% ओवर देयर आल्सो, डजंट मैटर। दिस इज हाउ यू शुड बी। That was my only way of telling you. Okay, Lavdi, take it in a positive manner. You also, all students get offended so much. सब offend हो जाते हो. No, sir, the circular motion concept is not that much clear to me also. Okay. और उसका reason you're not able to understand properly ना? No, sir, I'm not there. I have told you now. I didn't get that. You should have started with the statement, sir. Since I was not there for the lectures, my concept. What did you put forward? What did you put forward? Sir, This I is the said no. This is the approach of yours. Okay. sir. I'm very particular. When you speak to me, you speak very clearly. I'm Sorry, very sir. different. I No, will. I don't want, see one thing, students. I don't want sorries and thank yous in my life. I'm a person to be. तुम offline lectures आओ फिर. You will know what exactly that will be. The most rated, hated teacher. The most rated, hated teacher. Of course, because I am very, very clear with that. तुम अगर classroom में आते हो तो 200% sure हो गया. This is the approach. Studies के बारे में वही होना चाहिए. No, there is no casual approach. अगर मैं ही casually करूँगा, so that is different. I'm trying my best to see to that you get the maximum out of it. Okay, and every person has a different approach. Okay, now come on, no way more wasting time. Students 8, 9, 10, answer though. A sphere of mass m is tied to end of a string of length L and rotated through the other along a horizontal circular path of speed v. Students, देखो horizontal circular path दिया है. The work done in full horizontal circle है. चलो आंसर तो ये सीधा है students. What is the answer for this? You have a stone tied to a string and you're trying to move in a horizontal circle, holding it from one end, and the stone is over here performing circular motion in a horizontal plane. Okay. पूछा है the work done in full horizontal circle. Full horizontal circle, that means the work done for one complete circle. So it's work done for any path we consider is always zero. अगर one complete circle कर दिया तो displacement is zero. अगर मैं quarter of a circle भी कर दूं students तो velocity and force centripetal mutually perpendicular. The force and displacement also they are mutually perpendicular students. है ना? तो वहां पे भी तुम्हारा आंसर क्या आएगा? Work done will be zero. So students, the answer for this will be 8 will be A. Work done will be 0. Is this clear, students? 8-1. Work done for one complete cycle is always equal to 0 since displacement is 0. And ये भी ध्यान में रखना, अगर suppose ये question में change करके पूछूं, students, a satellite revolving around the Earth, is it performing uniform circular motion? Yes. What is work done by the Earth's gravitational force? 0. The gravitational force of the Earth is directed inwards. How is that satellite going? Displacement of the satellite is tangential. So students, force radially inward जा रहा है, displacement tangential जा रहा है, दोनों के बीच में angle कितना होगा? 90 degree होगा. Cos of 90 will be 0 because work done is equal to F dot S. And it's a dot product. So the component will be cos theta and theta is 90. So cos of 90 will be 0. Students, क्या ये 8th clear हुआ? Yes, sir. Yes. Ninth one, students. A motor car is moving at the speed of 30 meters per second on a circular path of radius 500. Its speed is increasing at the rate. Find the resultant acceleration. Anybody? Now this is also an easy one.
Speed is increasing at the rate of 2 meters per second square. What is its resultant acceleration? Two meter per second square. What? So 2 meter per second square. As the speed of the car is increasing by 2 meter per second square, its acceleration is also 2 meter by second square. Since acceleration is rate of change of speed with time. Very good. Dekha, students, who says that Kashish is weak in circular motion? Dekho. Yes, anybody who wants to claim that no, my answer is correct and Kashish is incorrect. Anybody? Anyone? Okay, students, let me put forward. Students, यहाँ पे दिया है a motor car is moving with a speed of 30 meters per second on a circular path. Students, we are doing question number 9, students. Okay, this is a motor car. It's moving with a speed of 30 meters per second on a circular path. Motor car is moving with a speed. So can I say this is a tangential velocity is given to you as 30 meters per second, and the radius of the circular path is given to you as how much? 500 meters, students. Its speed is increasing at the rate of, students, speed is increasing. V is increasing at the rate of 2 meters second square unit. Students, अगर मैं बोलूं speed is increasing with the rate of 2 meters per second square, यानी ये नॉन यूसीएम आ गया क्वेश्चन, ये नॉन यूसीएम आ गया. अगर ये नॉन यूसीएम आ गया तो भाई नॉन यूसीएम में तो सर ने बोला था 2 एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन सेंट्रिपिटल, एक्सेलरेशन टैंजेंशियल. अरे हाँ सर, ये जो इंक्रीजिंग स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ये बन जाएगा मेरा टैंजेंशियल, और v और r की वजह से हमें बन जाएगा एक्सेलरेशन सेंट्रिपिटल, v स्क्वायर बाय r. ओ यानी सर हमें जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था वो ना ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछा है ना ही सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन पूछा है. सर यहाँ पे हमें पूछा है एक्सेलरेशन नेट, एक्सेलरेशन नेट, एक्सेलरेशन नेट, एक्सेलरेशन नेट, एक्सेलरेशन नेट, एक्सेलरेशन नेट. आ गया? So what is the answer, students? Acceleration net will be equal to under root acceleration centripetal the whole square plus acceleration tangential the whole square. तो ये बताया कि नहीं बताया फॉर्मूला? हाँ students, read a Yes, question. sir. You are not reading English. Students, multiple choice questions क्यों नहीं होता मालूम है? First of all, along with being good in physics, you should be good in English. You all say that you all are from English medium or whatever it is. But I'm telling you very clearly because many students are not able to connect the English part which is written in the problems. क्या बोलना चाहता है प्रॉब्लम? तुम लोग ये बोल दो कि प्रॉब्लम समझ में नहीं आता है. क्या लिखा हुआ, क्या पूछा गया? स्टूडेंट्स, आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स 6 स्टूडेंट्स आर सेलिंग इन दैट बोट. उनको पता ही नहीं चलता क्या पूछा गया है. स्टूडेंट्स, इंग्लिश लिखा है, इंग्लिश के साथ में फिजिक्स लिखा है. अगर तुम बोलोगे नहीं सर मुझे फिजिक्स थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, तो व्हाट इज नॉट कनेक्टिंग ओवर देयर? Now read the same question once again. A sphere of mass, sorry, a motor car is moving with a speed 30 मीटर per second. तो तुम्हें पता होना चाहिए स्पीड किस तरफ होती है. तुम्हें v तो पता है ना किस तरफ जा रहा है. तुम्हें ये पता है कि सर्कुलर पाथ है, रेडियस किस तरफ होना चाहिए वो भी पता है. जैसे तुम b और r बता दोगे तो तुरंत तुम्हारा आंसर होगा सर v स्क्वायर बार तो एक्सेलरेशन सेंट्रिपेटल मिल सकता है. दूसरा उन्होंने क्लियर बोला कि ये जो वेलोसिटी है वो बढ़ती रह रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2. यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बताऊंगा तो क्या होगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बनाऊंगा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी इंक्रीजिंग. एक्सेलरेशन टैंजेंशियल, द मोशन इज एक्सेलरेटेड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये टैंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया.
अब इसमें रॉकेट साइंस थोड़ी था, ये कौन सा क्वेश्चन था, ये काइनेमैटिक्स पे चला गया सीधा। अभी क्या पूछा, व्हाट इज द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, वो भी पूछा है, दिया क्या है, रिजल्टेंट, यानी जैसे तुम्हें पता चला दो एक्सेलरेशन है तो तुम्हें रिजल्टेंट, एक है टैंजेंशियल, एक है सेंट्रिपिटल, इसको शिफ्ट कर दो पैरेलल, टेल है, ए नेट आ गया, अंडर ए सी बी स्क्वायर प्लस दिस यानी स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस, इन दोनों का आंसर निकालोगे 900 अपॉन 500 होगा स्टूडेंट्स, 30 स्क्वायर इज 900 अपॉन 500, तो स्टूडेंट्स ये होगा 900 अपॉन 500 द होल स्क्वायर, जो आंसर होगा वो यहाँ पे आएगा, ये होगा 2 स्क्वायर। व्हाट आंसर यू गेटिंग स्टूडेंट्स व्हेन यू सॉल्व इट? स्टूडेंट्स क्या मिलेगा? Students will be getting option is B. Can I erase it? Students? Next one, 10th one students. Anyone? Anybody wants to answer for 10th one? Students, can you hear me? It seems that you are not able to hear, so we can wind up the lecture. It seems like that. The network issue might be there. That's why you're not able to hear me and see me properly. No, sir. Sir, you are audible. Because there is no reply from the other end, as if I'm speaking to walls. मैं दीवारों से बात कर रहा हूँ. Sir, can I try? I'm not sure, but I'm trying. And for that, why you have to try? Already this is explained. ये हम derivation कर चुके हो. Turn your pages. Turn your pages of your book. So that's the problem. Not there. Sir, I'm not concerned with that. That is your call. That is your choice. Don't give that as a reason for not doing studies and not to able to crack question. That is your call. That was your liking. That was your way of approach towards studies for circular motion. वो तुमने decide किया है. किसी और ने decide नहीं किया है. So don't blame onto IIT and Hub. So don't blame at the other end. कि तुम्हें क्यों नहीं आ रहा है. वो तुम्हारा reason है. वो तुम्हारा solution तुम्हें find out करना पड़ेगा. You can't just go on giving that as a reason for not to get the answers. And that should be not the reason for not to score in the major test further ahead. Reason सबके है. तुम्हारे अकेले के नहीं है, लब्धि के भी रीजंस है. अभी साक्षी कंसिस्टेंटली आ रही है जा रही है, उसका भी नेटवर्क का इशू है, उसका भी रीजन है. दूसरे नए स्टूडेंट्स भी यहाँ पे हैं, दूसरे स्टूडेंट्स भी नए हैं who have entered. शायद ताजल सिंह है, if I'm not mistaken. Then Ravikant Rai is also there. They have their own reasons. लेकिन कोई इतना अपने रीजंस को आगे नहीं भेज रहा है. They are trying it. और यश ने आंसर दे दिया.
कशिश अभी समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं मैं. What am I trying to tell you? Nobody has told you since from your school life. That is why you are somewhere the other way around. God has given you a lot of potential. Kashish, I'm telling you very clearly. तुम बहुत remarkably कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा अपने में changes लाओ. You can do something wonders. Really can do it better. Yes, students. The answer is A. और students इसके लिए मैंने बता चुका हूँ. अगर तुम देखोगे तो ये क्वेश्चन क्या है students? एक रोटेटिंग ड्रम है students. ये मैं बता चुका हूँ स्टूडेंट्स. ये इसका भी डेरिवेशन कर दिया है और शायद मैंने किसी को खड़ा भी कर दिया था स्टूडेंट्स अंदर. कुछ याद आ रहा है? ये क्वेश्चन क्या बताता है स्टूडेंट्स? एक प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स और यहाँ पे मैंने अभी देखो मैं चाहता तो मैं बता सकता कि ये हो गया मेरा क्वेश्चन. स्टूडेंट्स ये पेज नंबर देख लेना, इसका ऑप्शन ए और मैं आगे बढ़ जाता. आई कैन डू लाइक दैट. But there are still certain sincere students who are working sincerely. Yeah, those who have slightly joined in late. कि कोई लेट आ गया है एडमिशंस में और जिसने मिस कर दिया है, जैसे तुमने मिस किया है वैसे दूसरों ने भी मिस किया है. अगर कोई चीज वापस आती है तो उसके बारे में तो आई नीड टू ना. ये हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स, ये रोटेटिंग ड्रम है स्टूडेंट्स. अगर तुम यहाँ पे खड़े हो और फिर हम क्या करते हैं, ये ड्रम को रोटेट करते हैं स्टूडेंट्स. और क्या वेलोसिटी से रोटेट करोगे, ध्यान से सुनना. विद व्हाट वेलोसिटी आई विल ट्राई टू रोटेट दिस पर्टिकुलर ड्रम so that the person should keep in contact with the wall. And if I remove the base, अभी मैं बेस निकाल देता हूँ स्टूडेंट्स. अगर ये बेस को मैंने बाहर निकाल दिया तो पूरा अंदर हॉलो हो जाएगा. जैसे मैंने बेस को बाहर निकाल दिया, the person is not going to fall. He will not fall downwards. नहीं गिरता है. यानी the person is hold to the wall. नीचे का सरफेस चला गया है, but still the person is hold to the wall. So उन्होंने पूछा with what angular velocity you are going to move the drum. तो देखो अभी forces देखो, what are the forces we can consider over here? Can do anyone wants to answer for this? Yash, you want to answer for this? Anybody else? So what did you ask? I asked that, can you tell me how to find out the angular velocity of the rotating drum so that the person should not fall down? Or the person is made to stuck to the wall when the floor is suddenly moved away, removed. The person is stuck to the wall. So omega is greater than or less than g by mu r. Greater than or less than? Sorry, greater than or equal to. हाँ, ऑप्शन इज ए. लेकिन क्यों आ रहा है ऑप्शन ए, क्यों आ रहा है? मेरा वो क्वेश्चन है. Anybody? Okay, students, now please pay attention for this. जब ये मूव होता है स्टूडेंट्स, उस टाइप पे फोर्सेस क्या है स्टूडेंट्स? mg नीचे की तरफ है ना. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस तरफ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस तरफ जाएगा. एग्रीड. नाउ सिंस इसका मोशन एक्सेलरेटेड स्टूडेंट्स, there is a centripetal force, but at a certain speed what is going to happen students? There is one more force which is trying to hold the person in the outward direction students. यानी जो तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो एक्चुअली फोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल है, which is equal in magnitude and opposite in direction to force centripetal. यानी स्टूडेंट्स तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सेंट्रीपिटल है सेंट्रीपिटल, लेकिन which is equal to centrifugal. तो समझ में आ रहा है? ये फोर्स बॉडी को होल्ड करके रख रहा है, mg नीचे की तरफ जा रहा है. अगर सपोज बाय चांस अगर मैंने ये ड्रम को सफिशिएंट स्पीड से नहीं मूव किया तो mg की वजह से बंदा नीचे गिरेगा, mg की वजह से पर्सन विल फॉल डाउन. फ्रिक्शन का फोर्स किस तरफ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा. लेकिन we are trying to move the drum with a certain angular speed. If I try to move with a certain angular speed so that now the person does not fall. If the person does not fall, that means that becomes a condition for which equilibrium?
स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ये तो फोर्सेस पढ़ चुके हो तुम लोग। तो algebraic sum of net force acting on the person should be equal to 0. Yani if this is a person, then there are forces along y-axis should be 0 and forces along x-axis should be 0. So which are the forces? Say your force of centripetal becomes my normal reaction force and your force of static friction becomes equal to mg. So can I say force of static friction is equal to m into g? ये दोनों बैलेंस हो रहा है. Force of static friction is mu s into n is equal to m into g. But my normal reaction force is equal to what? Centripetal force. अभी centripetal force के 3 फॉर्मूला है. कितने फॉर्मूलाज है? 3. एक होगा ये फोर्स है स्टूडेंट्स, तो मास इनटू एक्सेलरेशन mr ओमेगा स्क्वायर mv स्क्वायर बाय r m इंटू v इंटू ओमेगा. अभी तीनों में से मैं कौन सा फॉर्मूला उठाऊंगा? तो बोलेंगे सर आपको ओमेगा चाहिए, तो हम ये वाला फॉर्मूला लेंगे क्योंकि हमें रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ पता होगा, रेडियस ऑफ द ड्रम पता है. तो नाउ कैन आई से म्यू एस, एन की जगह पे मैं क्या लिखूंगा सर? एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू जी. एम विल गेट कैंसिल. एग्रीड? So what exactly omega square will be equal to? G upon mu r. Omega will be equal to what? Root of G upon mu r. Minimum will be equal, maximum will be greater. Less than, अगर omega की वैल्यू इससे कम हुई, less than हुई ना, तो बंदा नीचे गिर जाएगा. Equal to होगा तो वो होल्ड करके रख रहा है. हमेशा it should be greater so that it's perfectly held to the wall. Or the person is held to the wall perfectly. Is this clear, students? Yes, sir. Can I erase it? Friends, can I erase it? Okay, students. Can you give an answer for the 13th one, students? Just a theoretical one, students. Let's see if you can answer for the 13th one. Okay, page number 94, 13th one. Students, 15th one. 13th, 15th, and 17th. So this you should get it easily, students. These are somewhat theoretical. 13th, 15th, and 17th, page number 9494 of your module. And solve problems, students. Is anyone 13th, 15th? Sakshi has given the answer for the 13th. Sir, Can you give it? 13th one, can I? सर आप वो प्लान देखना चाहेंगे तो आप मीन्स हाँ, मैं देखना चाहूंगा. कौन दिखा रहा है? सर मेरी बहन है, वो काम कर रही है सर. तो मुझे कि मैंने कशिश को डांट दिया तो बोले कि सर आप खुद देखना चाहोगे. ओके. हाँ, who wants to answer 13, 15 and 17?
Sir, 13th one. हाँ बोलो. So, since the particle is acted upon by a force of constant magnitude, which is always perpendicular to the velocity of the particle, so work done by the force in the direction of velocity will be zero. So the Okay. magnitude of velocity will not change due to the force. So kinetic energy is Ke equals to half mv square, which is constant. Now mass and magnitude of velocity will always be constant in this given situation. So the kinetic energy will also be constant. So the answer is C. देखा स्टूडेंट्स, देखा कौन बोलता है कि उसको नहीं आता है स्टूडेंट्स. She gave this students, उसने जो ब्रिज का भी सी द टाइम मैंने आई हैव अ सिंपल फंडा स्टूडेंट्स. अगर तुम अच्छा करोगे तो यस यू विल गेट एन एप्रिसिएशन. एब्सोल्युटली करेक्ट. मेरे हाथ में एक हाथ में लड्डू होता है, दूसरे हाथ में छड़ी होती है स्टूडेंट्स. मैं छड़ी मारता नहीं, मैं सिर्फ दिखाता हूँ. आई ऑलवेज शो इट. I never raise hands. My tongue is sufficient enough. I never use abusive language. Never. I never hit my students. Never. But that is somewhere there is a decency in that case. Now see, she's answered. Of course, very well placed. उसने जो statement बोला बहुत ही correctly बोला. तो इससे पता चलता है कि she is conceptually strong. ऐसा नहीं कि conceptually. It's only that she has missed out lectures. She's giving that as a reason quite often. तो उसके ऊपर overcome करना चाहिए ना. Rather than giving those reasons. और यहाँ पे साक्षी कंसिस्टेंटली आंसर दे रही है, लेकिन अनम्यूट कभी नहीं करती. अनम्यूट कभी नहीं. मैं ऐसे स्टूडेंट्स को ज्यादा कंसीडर नहीं करूंगा. मैं फ्रैंकली स्पीकिंग बोल रहा हूँ. मैं ऐसे स्टूडेंट्स को ज्यादा कंसीडर नहीं करता जो सिर्फ पोस्ट करके छोड़ देते हैं, क्योंकि पोस्टिंग में मेरा आंसर पीछे चला जाता है. जब भी तुम अनम्यूट करोगे, डिस्कस करते हो, अपने आप को प्रूव करते हो, तो दैट इज वेल एंड गुड कि यस यू आर ऑल्सो अ कैंडिडेट टू बी वॉच्ड फ्रॉम माई एंड. यू नो दिस इज ऑल्सो वाइज पर्सन. So somewhere when you unmute yourself, your confidence also raises. So what she said is absolutely correct, students, for the 13th one. सबसे पहले उसने क्या बोला, that is velocity, students. क्या बोला उन्होंने, force at constant magnitude. सबसे पहले force constant magnitude है, और वो बोला है perpendicular to velocity. अगर force perpendicular velocity है, तो ये कौन सा force हुआ? Force centripetal हुआ. F dot V का आंसर क्या होगा? सर F dot V का आंसर 0 होगा, क्योंकि what exactly power will be for centripetal force into velocity. अभी यानी अगर किसी ने पूछा what kind of motion the body is going to have, तो तुरंत तुम्हें बोलना चाहिए path is circular, path is circular. लेकिन अभी मैंने बोला force is constant, तो force constant है centripetal, तो इसका फॉर्मूला कितना होगा सर? mr ओमेगा स्क्वायर mv स्क्वायर बाय r mv ओमेगा. अगर ये force centripetal constant है, radius of constant है, mass of the car is constant, so the body is set to move with constant speed. अगर speed constant है, mass constant है, the kinetic energy of the body should be constant. Therefore, the option will be equal to C. Fifteenth. If a car is moving around a circle of radius r at a constant speed, अभी देखो uniform circular motion आ गया, है ना? Uniform circular motion आ गया. Uniform circular motion, the force in the car is where? Towards the center. ये सबको आना चाहिए, और इसका magnitude क्या होना चाहिए? mv square by r. So the answer of the 15th one will be C. Can you give an answer for the 17th one, the last question, students, for the day's play? And give me the reason behind it. Reason. Sakya, 17th is incorrect. You see, when I'm discussing, still there are 5 minutes left, and 5 students are out.
This is a problem with studies. आने दो, सबके ट्रैक रिकॉर्ड है. मीटिंग में आओ. Yes, can we tell me, students? Students, when a girl rides down the corner of her bicycle at a steady speed, students, girl is riding at a constant speed. Students, it's on a corner of a bicycle, corner on a bicycle at a steady speed. यानी very exactly rides round, यानी circular path हो गया, और उसका speed constant है. तो who is trying to hold the car, or the cycle? The friction. The centripetal force is provided by the force of friction between the tires and the ground. Students, यहाँ पे inclination के बारे में नहीं है. ये क्या है मालूम है? तुम सीधे रोड पे जा रहे हो और ऑल ऑफ अ सडन आगे एक टर्न आ गया, तो तुम टर्न पे चले गए. तुम है वर्टिकली, लेकिन तुम टर्न पे जा रहे हो. तो उस टाइम पे कौन सा फोर्स तुम्हें होल्ड करके रख रहा है? तो स्टूडेंट्स, ये वाला कौन सा डेरिवेशन था? Velocity of a car on a circular unbanked road considering friction. Unbanked road, students. And the car is moving with uniform circular motion. Students, अगर तुमने ये डेरिवेशन देखा होगा ना, v is equal to mu r g, वो वाला है ये. यहाँ पे साइक्लिस्ट बेंड नहीं हो रहा है, साइक्लिस्ट सिर्फ एक कॉर्नर पे आ रहा है जहाँ पे थोड़ा सा टर्न है. तो जैसे वो टर्निंग पे आएगा, तो उस टाइम पे उस कार को सर्कुलर पाथ के ऊपर रिवॉल्व कौन करवा रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स सपोर्ट कर रहा है. अगर बाय चांस का साइकिल का स्पीड थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, ग्रेटर देन 100 br/g, तो the cycle will go tangentially outwards. Okay, so the answer for this will be 17th. Next lecture will be continuing further ahead. Okay.